Good morning. Sorry. Good afternoon, everyone. Wish you all a very Merry Christmas. Welcome to the Bank Nifty Expiry, and we will have Arpit sir with us today in the Arpit sir with us today for the Bank Nifty Expiry session. अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें, सुबह ओपनिंग के बाद से ही निफ्टी फ्लैटिश टू नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है, राइट? ओपनिंग के टाइम में भी, राइट, व्हेन द मार्केट गॉट ओपन, इट वाज फ्लैटिश टू नेगेटिव ओनली, एंड पूरे दिन के कंसोलिडेशन के बाद अभी भी वही रेंज में ट्रेड कर रहा है जहां पे वो ओपन हुआ था, राइट? तो एक देखा जाएगा तो ये 100 पॉइंट्स के रेंज में ही मूव हो रहा है, राइट? अगर हम देखा जाए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट्स के डाउन साइड पे है, बट एक पूरे रेंज में मूव हो रहा है, राइट? सो लेट्स सी, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो हमें सजेस्ट करेंगे कि कौन सा ट्रेड लेना है, इफ देयर विल बी एनी नेकेड स्ट्राइक दैट वी विल कीप आवर आई ऑन, या तो हम स्ट्रेटजी में प्ले करेंगे। अर्पित सर आपको सारी चीजें बता देंगे, राइट? सो वी ऑलरेडी हैव अर्पित सर विद अस नाउ, so let's wait guys, Arpit sir to share his insight about the market. So Arpit sir, let me know if I'm audible to you. Very good afternoon, guys. You're audible. I'm just sitting with a frame. Just give me a minute. Sure, Arpit sir. Vinay, the screen is visible? Yes, Arpit sir, it's visible. Okay. Yeah, so we are good to go. Over to you, sir. Yeah, thank you. Very good afternoon, guys. First and foremost, wishing you all a very Merry Christmas in advance. And if we see, the favorite color of Christmas is red, and that is there on our screens. Market overall, if you see from last couple of days, पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो मार्केट में काफी हमने मंदी भी देखी है, थोड़ा सा पुल बैक देखा, बट बिगर ट्रेंड ऑफ द मार्केट अभी भी इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा नेगेटिव है। एंड अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखें, तो पहले हम अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, बैंक निफ्टी मॉर्निंग में थोड़ा सा नेगेटिव फ्लैटिश खुला, एंड सिंस देन आई गो ऑन टू द आर्ली चार्ट for better understanding for the intraday setup. If you see, one of the narrowest range we have seen today between a range of 200 points, niche mein 51,100 side, and on the upper band 51,350, 51,400. So today being the monthly expiry, but yes, monthly expiry hai, but today so far the day has been for the option writers totally. जिसने भी राइटिंग की है एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, उसमें काफी अच्छा डीके हुआ बिकॉज ऑफ द मंथली एक्सपायरी अलोंग विद दैट फॉल इन वोलेटिलिटी। कल छुट्टी भी है और ओवरऑल एक कमिंग वीक तक 31st तक देयर आर नो मेजर इवेंट्स बिकॉज ऑफ व्हिच ग्लोबल फ्रंट पे भी सबड्यू है। So all in all, if we talk about Bank Nifty, let me look at the levels wise. So Bank Nifty, if we see overall weekly scale में last week हमने काफी selling pressure देखा था, almost 4 to 5% का correction देखा था। Let me open the weekly chart. So weekly पे bearish candle बनाई है। पिछले 2 दिन से अगर हम देखें थोड़ा सा consolidate कर रहा है Bank Nifty on the daily chart. So immediate basis पे हमारा stand so far morning से major trend जो है एक बार negative ही है जब तक Bank Nifty 51,500 के नीचे रहता है closing basis पे। अगर हम अभी इमीडिएट लेवल्स के बारे में बात करें, सो लेट्स फोकस ऑन द इमीडिएट लेवल्स, सो दैट कम्स आउट टू बी अराउंड 51,350, दैट दिस आर द इंट्राडे चार्ट्स। 51,350 इंट्राडे हर्डल है बैंक निफ्टी में, नीचे में 51,100 और 51,000 सपोर्ट हो है। सो बैंक निफ्टी में हमारा बाय स्लाइटली नेगेटिव है, 51,350 के नीचे स्पॉट जब तक रहता है बाय वुड बी नेगेटिव। At the same time, नीचे में भी support intact है 51,100 और 51,000. So today, overall, looking at the overall monthly expiry perspective also, so far it has been dull since morning, as Avinash rightly pointed out to be. But so far, if we see, we'll try to find out the setups for option buying because monthly expiry is definitely everyone is eagerly waiting for the trade setups. So definitely हमारे call and puts दोनों radar पे है. So बैंक निफ्टी के बारे में हमने बात किया. अब now coming to निफ्टी. निफ्टी के बारे में बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर है। लास्ट वीक हमने एक मैसिव फॉल देखा था, बेरिश कैंडल बनाया था वीकली स्केल पे। आई ओपन अप द चार्ट्स आल्सो। वीकली पे अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया था। डेली स्केल पे कल हमने थोड़ा सा पुल बैक देखा, बट ओवरऑल इफ यू सी डेली स्केल पे इट इज हावरिंग नेक्स्ट 200 डेमा, 200 डेमा के वहां पे चल रहा है और अपर बैंड में 24,050 मेजर लेवल जो है और इमीडिएट बेस पे 23,850। तो निफ्टी में भी 23,850 के जब तक नीचे रहता है थोड़ा सा बाइस नेगेटिव ही रहेगा, नीचे 23,650 23,500 के लिए। सो ऑल इन ऑल बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी आर ट्रेडिंग नियर क्रूशियल मूविंग एवरेजेस। ओवरऑल बाइस स्लाइटली नेगेटिव है,
आज निफ्टी में हमने थोड़ा 100 पॉइंट का पुल बैक भी देखा था, बट अगेन ऊपर के लेवल पे फेल हुआ एंड अगेन इट इज एट द लोअर बैंड ऑफ इट्स ट्रेडिंग रेंज। सो निफ्टी में 23,850 का इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे 51,350 इज द इमीडिएट हर्डल। राइट नाउ भी चल रहा है 51,200 का राउंड। सो अगर इसी के साथ हम थोड़ा डेरिवेटिव डेटा के बारे में बात करें, सो वीकली व्यू है 51,275 है जो एक इंट्राडे हर्डल रहेगा, और मंथली व्यू है 52,750 है जो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट नीचे है। इस बार हम देखें मंथली सीरीज में बैंक निफ्टी इज डाउन बाय 1.5%। सो ऑल इन ऑल बायस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे नेगेटिव ही है। इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा पुल बैक आया है बट मोमेंटम इज मिसिंग, सो वी आर लुकिंग फॉर द सेटअप। सो बैंक निफ्टी में रेंज हमने बोली 51,350 ऑन द अपर मैन रेजिस्टेंस है, नीचे में 51,100 का सपोर्ट है। फॉर दिस जो हम स्ट्राइक्स अभी देख रहे हैं 51,300 का पुट देख रहे हैं और 51,200 का कॉल देख रहे हैं, दिस टू बोथ द स्ट्राइक्स वर ट्रैकिंग, बट एज ऑफ नाउ फर्स्ट मेजर फोकस ऑन 51,300 पुट with the view that जब तक बैंक निफ्टी 51,350 के नीचे रहता है हमारा स्टैंस नेगेटिव रहेगा। सो 51,300 एंड 51,400 पुट, I'll repeat 51,300 put and 51,400 put you are tracking for Bank Nifty to play the downside swing. So अब ये दो पुट रडार पे लगा लीजिए एंड विल अपडेट कि इसको कैसे प्ले आउट करना है। इन द मीन टाइम अगर हम ओवरऑल मार्केट सेटअप देखे जाए तो काफी स्टॉक्स मंदी में भी है और काफी पेन में है स्टॉक्स। सो उसमें हमारा एक पहला आया एसटीबीटी आइडिया, दैट इज मारुति। ऑटो इंडेक्स अगर देखें तो कंटिन्यूअसली लोअर है का फॉर्मेशन इंटैक्ट है वीकली स्केल पे, और उसमें अगर हम देखें मारुति काफी अंडर परफॉर्म किया है और फ्रेश ब्रेकडाउन दिया डेली स्केल पे, वीकली स्केल पे। सो मारुति फ्यूचर्स का मेरी सेल की सलाह है 10,900 का स्टॉप लॉस रख के नीचे 10,450 के टारगेट के लिए मारुति में हमारी सेल की सलाह रहेगी। दैट इज आवर फर्स्ट एसटीबीटी आइडिया, बिकॉज बोलते हैं जैसे मार्केट है हमें मार्केट को ट्रेंड के साथ प्ले करना है। अभी इमीडिएटली मार्केट का ट्रेंड जो है थोड़ा चॉपी है, अपर बैंड पे अपसाइड है और नीचे थोड़ी सेलिंग आ रही है। सो फर्स्ट एसटीबीटी आइडिया इज मारुति। कमिंग बैक टू निफ्टी बैंक लेवल्स, 51,100 इज अ सपोर्ट जोन एंड अपर बैंड में 51,350 इज अ हर्डल जोन। सो हमारा स्लाइटली बायस नेगेटिव है। लेट मी लुक एट द अगेन इंट्राडे चार्ट्स। सो इफ आई सी द इंट्राडे चार्ट्स, बार 51,350 300 के वहां पे थोड़ा सप्लाई आ रहा है, वो वीकली वीवैप भी है एंड 51,400 के पुट्स के चार्ट हमने ओपन किए। अब मैं अपडेट कि इसको कैसे प्ले आउट करना है। एक चीज हमें मेंशन ध्यान रखनी है, एचडीएफसी बैंक जो आज सुबह से थोड़ा सा डल रहा है रिलेटिवली बेटर है, जिसके वजह से फ्री फ्लो हमें वन साइड मंदी नहीं दिख रही है, बेरिशनेस नहीं दिख रही बैंक निफ्टी में, बट एट द सेम टाइम एसबीआई, कोटक, एक्सिस ऑल थ्री आर डल। सो विद इन द बैंकिंग स्पेस फायर फाइटिंग चल रही है, एक दो स्टॉक्स पॉजिटिव है, दो तीन स्टॉक्स नेगेटिव है, जिसके वजह से but as we go with the bigger trend still is under pressure. So levels हमने डिस्कस किए, स्ट्राइक्स हमने मेंशन किया अविनाश, revisit and how to play this swing will update on it. So guys, we have shared a STBT on Maruti, right? So we have to sell Maruti 26 December 2024 futures, right? Currently trading near 10,735 rupees around, right? So यही current price पे हमें उसे sell करना है. Stop loss will be 10,867 and the target for the upside will be 10,400 and 10,473, right? So this is the STBT that we have shared, and apart from that, the strikes that we are keeping on radar is Bank Nifty 51,300 put and 51,400 put, right, Alpit sir? Yes, absolutely. Also, as we are talking about Bank Nifty, so also we revisit the structures also of the private banks. So as we are discussing, HDFC Bank retests its previous breakout zone. So this is slightly positive, because of which Bank Nifty there is no free fall. But इसके साथ अगर हम parallelly अगर SBI का structure देखें, तो SBI डेली और वीकली स्केल पे वापस अपने लोअर बैंड पे है और ओवरऑल सेटअप वाइज देखें तो थोड़ा सा पेन में है। लाइकवाइज इफ वी सी इंडसइंड बैंक आल्सो, इंडसइंड बैंक भी स्ट्रक्चर वाइज पेन में है। इट हैज ब्रोकन इट्स मेजर हर्ट सपोर्ट जोन ऑफ 1000 एंड स्लोली स्टेडीली नीचे शिफ्ट हो रहा है। सो अगर हम बैंकिंग स्पेस का ओवरऑल देखें, सो कंसोलिडेटेड स्लाइटली पॉजिटिव एक दो काउंटर और बाकी दो तीन काउंटर स्लाइटली नेगेटिव है, जिसके वजह से बैंक निफ्टी में हमने लास्ट वीक देखे थे, बट एज वी हैव सीन जैसे सेटअप बनेगा हम डेफिनेटली अपडेट करेंगे कि कैसे इसको प्ले आउट करना है। लेवल्स हमने बोले 51,350 इंट्राडे हर्डल है फॉर बैंक निफ्टी, नीचे में सपोर्ट है 51,100 का।
अब देयर आर टू वेज टू प्ले आउट, या तो हम थोड़ा सा बाउंस का वेट करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक अगर आता है तो हम वो अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे टू ऐड पुट्स, और या तो अगर ब्रेकडाउन होता है 51-200 के नीचे सस्टेन करता है, देन वी कैन प्ले इट आउट. So definitely during the session we'll try to update on it as per the market setup and as per the market momentum. In the meantime, I would like to touch upon few sectors that are doing well. That is, first is pharma sector. So अगर pharma sector के बारे में बात करें, defensive as its property from last couple of years. लास्ट वीक हमने काफी अच्छा करेक्शन देखा था निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट, निफ्टी आईटी, बैंकिंग में, बट फार्मा हैज बीन आउट परफॉर्मर. So pharma sector is looking good, and within that one Syria idea that is looking good from positionally is Lupin. So अगर Lupin हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनाया है अराउंड 2050, रेंज ब्रेकआउट दिया है, ऊपर ट्रेड कर रहा है, and I think within the pharma pack this is the best counter that is relatively outperform. So हमें लग रहा है कि धीरे-धीरे ये वापस 300 तक के मूव दिख सकते हैं हमें आने वाले कुछ हफ्तों में. So Lupin would be a top Syria idea within the pharma pack. 2160 चल रहा है, आप करंट लेवल पे बाय करें, थोड़े से डिप पे 2140 से लेके 2160 की रेंज में बाय करें, 2080 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 2250 के टारगेट के लिए. तो वन सीरिया आइडिया वी हैव शेयर, एसटीबीटी हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, टर्मिनल्स पे भी फ्लैश किया है, अविनाश ने मेंशन किया है, बैंक निफ्टी के लेवल्स हमने डिस्कस किया, वी आर वेटिंग फॉर द सेटअप. सो जैसे सेट फेवरेबल रहेगा एज पर द मार्केट मोमेंटम विल अप. ब्रॉडर मार्केट पिक्चर, it has been very volatile, and today and yesterday relatively sideways to mixed bias, but it has not been that great. So one thing you have to understand that the overall sizing of your position should be according to the market setup wise. It's not that easy move that we are able to play it out. Intraday swings है definitely वो आप उसको play कर सकते हैं, but as per the market setup wise advanced decline ratio जो अभी भी है वो 1:1 के फेवर में ही है. That clearly indicates कि bulls and bears का tug of war is going on. Coming back to Nifty Bank, so let us revisit the levels and we'll try to focus on the trade कि कैसे हमें trade मिल रहा है तो हम उसको play out करें. So 51,300 could be a tracking. Let me just revisit that. 51,300 का put हम देख रहे हैं, अभी चल रहा है around 75-78 के around. एंड नीचे हम देखें तो उसका सपोर्ट है अराउंड, आई जस्ट चेक द ऑप्शन चार्ट, अराउंड 40-45 का, अपर बैंड में 100-120 का हर्डल जोन है. सो आई थिंक वी विल स्टिक टू दिस स्ट्राइक एज ऑफ नाउ 51,300 बिकॉज इन द मनी है, सो डेफिनेटली दैट्स बेस्ट फॉर अस. एंड एट द सेम टाइम ध्यान रखिए मोमेंटम मिसिंग है, बट नो वरीज, विल सी. सो 51,300 पुट व्हाट विल डू, विल ट्राई टू ऐड ऑन सम बाउंस इन बैंक निफ्टी. तो अभी 77 चल रहा है. लेट मी हैव अ लुक एट दिस चार्ट, किसमें मेजर सपोर्ट जोन का है. या सो आई थिंक अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर दिस स्ट्राइक वुड बी बिटवीन 60 to 65. अविनाश विल रिपीट, 60 से 65 की रेंज में ये जो पुट है आप बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी का 51,300. आई रिपीट 51,300 का पुट 60 से 65 की रेंज में आप बाय कर सकते हैं. 30 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 105 एंड देन 120 के टारगेट के लिए. रिपीट 51,300 पुट अभी चल रहा है 76, 60 से 65 की रेंज में बाय करें, 30 का एसएल रख के ऊपर 105 एंड देन 125 के. Great. So guys, we have initiated a trade on bank 300 put. We have to buy it near 60 to 65 with a stop loss of 30. The target for the upside will be 105 and 120 or 25. Yes. Great. Yeah, absolutely. So अभी 72 चल रहा है, जैसे इनिशिएट होगा हम उसके बारे में अपडेट भी दे देंगे. Avinash, what you can do, we can take couple of queries also, stock queries, and as and when we'll see the setup is getting in a favor or as it is getting triggered, we'll update on it. Sure, Arpit sir. So what is your view on Tata Motor for 1 month, bought at 761 level? Tata Motors for 1 month. If I see overall auto pack has been in a weak shape. From last couple of weeks, we have seen continuously selling across the auto pack. अगर हम अभी भी सेटअप वाइज देखें वीकली स्केल पे लोअर है, लोअर उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, कोई भी मेजर बाउंस बैक नहीं आया है, बट आपका ऑलरेडी बाई प्राइस 760 के अराउंड है, सो स्टॉक इज ऑलरेडी डाउन फ्रॉम हाई लेवल्स. इमीडिएट बेसिस पे अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, जब नहीं करता है, देयर इज नो मेजर रिवर्सल.
जो अगर आप पूछे सो पोजिशनली 755 760 एक मेजर हर्डल जोन है जो आपका बाइंग प्राइस है. सो एनी क्लोजिंग अबाउट 760 वुड चेंज द सेटअप फॉर द स्टॉक टिल दैट कि बाउंस पे है तो आप उसको एग्जिट करने की सलाह है. ग्रेट. Bikaji bought 1000 shares at 900. Bikaji bought at 900,000 shares. ओके. सो इफ यू सी काफी अच्छा करेक्टिव मूव हमने बीकाजी में देखा पिछले 1.5 से 2 महीनों में. एक पहले वन वे रैली हमने देखी थी फ्रॉम 700 टू 1000 तक का. वहां से हमने वापस एक साइडवेज टू डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व देखा है. So if you see overall setup wise, it is respecting to its 200 DEMA, but immediate basis पे एक ऊपर बैंड में 820 का हर्डल है और नीचे काइंड ऑफ डबल बॉटम बना अब तक, बट नीचे कंफर्मेशन नहीं है. सो आई थिंक 750 से लेके 820 की एक ब्रॉडर रेंज है बीकाजी की. जब तक 750 को होल्ड करता है तब तक आप होल्ड करके रखें. बड़ा ट्रेंड ऑफ द स्टॉक अभी भी पॉजिटिव है, सो बेटर टू होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 750. In the meantime, one BTSG idea that we have flashed on terminals and we have added on the system. Praj Industries stream is very strong, so let's scale. वीकली स्केल पे एक बड़े मूव के बाद पिछले 4 से 5 हफ्ते में कंसोलिडेट कर रहा है, जबकि मार्केट में एक अच्छी खासी वीकनेस देखी. तो प्राज इंडस्ट्रीज अ बीटीएसटी आइडिया 819 अभी चल रहा है. आप 818 819 के रेंज में बाय करें. 801 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 855 के टारगेट के लिए. सो प्राज इंडस्ट्रीज ऑन द वीकली एंड डेली स्केल इज वेरी स्ट्रांग. अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं एंड ओवरऑल स्पेस में ये काफी अच्छा ट्रैक्शन है. एंड जनरली हमें देखना कि जब मार्केट गिर रहा है और अगर वो स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो होल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली वी सी गुड अपटिक्स आल्सो इन दैट स्टॉक. दिस वाज अ क्लासिक एग्जांपल. लास्ट वीक भी हमने शेयर किया था फॉर केफिन टेक. केफिन हम काफी बुलिश थे लास्ट वीक, हमने रिकमेंड भी किया था सीडीआई कॉल के लिए और एक अच्छा 10-12% का मूव देखा हमने 1280 से लेके 1480 तक का. आज भी स्टॉक ऊपर है. So Praj is a BTST idea, Maruti is a STPT idea, one CDI that we have already gave is Lupin. Bank Nifty का जो पुट है वो ऑलरेडी हमने बाइंग प्राइस ट्रिगर बाइंग रेंज दी हुई है, अभी 75 के अराउंड चल रहा है. एंड Praj is the latest BTST that we have shared, that is there from that side. Along with that sector specific में एक अच्छा मोमेंटम है. लास्ट वीक में हमने रेकमेंड किया था that was from the reality by overall reality, and अभी भी अगर हम देखें सेटअप वाइज overall reality is still very strong. वीकली और मंथली रेंज ब्रेकआउट दिया है. डेली पे फ्रेश पुल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट दिया था. पिछले 4 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है. मार्केट की चॉपीनेस के बाद अपनी गेन्स को होल्ड कर रहा है. So definitely overall from 1 to 2 months perspective looks good for 2350, 2450, 2550 के लिए positionally. So Lupin and overall relative good looks good from the CDI pack from a medium term. BTST हमने शेयर किया है, STBT भी हमने अपडेट किया है. बैंक निफ्टी अभी 77 78 के अराउंड चल रहा है. हम देख रहे हैं एज ऑफ नाउ जो बाइंग रेंज अब तक आया नहीं है, अगर फेवरेबल रहेगा तो ही हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ विल बिकॉज़ देयर इज नो थ्रस्ट. अविनाश राइटली पॉइंटेड आउट एक्सक्यूज मी, सेशन के जस्ट स्टार्ट में उन्होंने बोला था कि बैंक निफ्टी की अगर हम रेंज देखें तो barely अराउंड 200 पॉइंट्स. एंड इसी के साथ अगर मैं ओवाई डेटा भी देखूं, कॉल ओवाई एंड पुट ओवाई, massive writing has been seen on 51 200 call and put strike. So the writers, they want to do it, they want try to close out bank nifty near itself, because of which अभी momentum नहीं है, but still as far as setup wise will go wise हमने range दी हुई है. जैसे trigger होएगा तो आप top queries and will update on the trade. Sure, Abhijit. So Jaidev ji have a question on Tata Steel. Tata Steel, let me have a look. Yeah, so want to already bought or what is the question in that? So what is your view on Tata Steel? Yeah, so if I see metal as a pack, whenever we have seen a sharp uptick in the dollar index also, generally it's a negative correlation for the metal indices. And within that also, if we see the Tata Steel, huge underperformer, one of the weakest stock within the entire metal pack. Weekly scale पे there is no major reversal, lower highs. Daily scale पे भी stock में कोई major momentum नहीं है. Immediate basis पे जब तक 145, 146 level नहीं निकलता है, तब तक would not be aggressive on the counter. पास में है जिसके वजह से फ्री फ्लो मोमेंटम नहीं है. सो 134 का सपोर्ट है, ऊपर 145 का हर्डल है. बेटर टू एग्जिट ऑन बाउंस. देयर इज नो मेजर मोमेंटम इन द स्टॉक फॉर द पॉजिटिव साइड. Okay. What about CDSL? Should we buy at current level or should we wait?
Yeah, so CDSL, if you see, it has been entered in the FNO segment also, and we've seen very good rally from 1650 to almost 2000 level in last week. However, ले 3 से 4 दिन में हमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी है. So I think करंट जंक्शन पे 2000 वाला वापस 28 के अराउंड आया है. मेजर अगर सपोर्ट जोन अगर आप देखिए, जो पहले एक हर्डल जोन था 1720 के अराउंड. So good entry point would be around 1730, 1740 levels. Positionally एक मेजर सपोर्ट है. Immediate risk में lower highs ही बना रहा है, so I think good entry point would be around 1720, 1730. Also, as we see the bigger bull market trend, every bull run में एक नई sectors play out हो रहा है. ये इस बार अगर आप देखें, so all the exchanges, capital good theme काफी अच्छी play out हुई है. So I think CDSL would be a good better entry point here 1720, 1730 levels. Positionally अभी भी setup बहुत strong है. Weekly में थोड़ा cool off हुआ है, but the bigger trend is positive. So जब तक ये 1650 के ऊपर है, buys will be positive for 2000, 2200 plus. Okay. Yeah, coming back just to Bank Nifty is flattish near 51, 200 itself. The put जो हमने दिया है, जो range की है, अभी भी 75, 77 के around ही चल रहा है. There is no flow as of now. There is no major swing as of now. No worries, as we have already given the range. We will wait for that range and will update STBT, BTST we have shared, yeah, ideas we have shared. Yeah, Avinash, you were saying something. Right. So, Arpit, is it initiated now? Right now it is around 69, 70 levels. Our buying range is between 60 to 65, 51, 300 put. As of now, it has not been initiated because it is still stuck in a range. जैसे भी initiate होगा, definitely will update. We have multiple screens with us. एक में option chart चल रहा है, एक में terminal है, एक में हमारे Falcons and all the softwares are open. So हम update करेंगे. As of now, it's not initiated. Great. So guys, just keep an eye on the trade. हम लोग भी track कर ही रहे, right? And if there will be any update, we'll definitely share the same to you. So meanwhile, we'll continue with taking the stock queries. So what is your view on HCG? Akhilji had bought HCG at 486 levels. HEG. HCG. CG. It's Healthcare Global. Okay. Right. Yeah. What is the buying price? 486. 486, so it's near of that price itself. If I look at the weekly setup, last week हमने एक अच्छा मोमेंट देखा था पूरे हेल्थकेयर स्पेस में. सेटअप वाइज वीकली स्केल पे थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखी है, बट बिगर ट्रेंड ऑफ द स्टॉक देखे तो अभी भी पॉजिटिव है. आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे 470 का एक इमीडिएट सपोर्ट है. जब तक 470 के ऊपर रहता है, बाइस वुड बी पॉजिटिव. सो आप क्लोजिंग बेसिस पे 470 का लेवल देखिए. जब तक इसके ऊपर है, बाइस वुड बी पॉजिटिव फॉर 500, 510 प्लस. Okay. HDFC Bank 30th Jan 1800 call. HDFC Bank Bought 1800 call of 13th Jan. Okay, 30th Jan, right? So overall HDFC Bank का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो बायस बिकॉज एक मंथली स्केल पे रिटेस्ट किया है, वीकली स्केल पे लोअर राइज को नेगेट किया है. सो आई थिंक आप कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हो कॉल, क्योंकि आपने नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन बाय किया होगा. सो यू कैन होल्ड दैट कॉल, बट आप स्टॉप लॉस ध्यान रखिए. एचडीएफसी बैंक में 1765 का स्पॉट लेवल्स, उसके हिसाब से आपको ऑप्शन को होल्ड करना पड़ेगा. 1765 वुड बी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर एचडीएफसी बैंक टू होल्ड दैट कॉल. सेटअप वाइज ओवरऑल पॉजिटिव है. कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी ट्रेड, द ट्रेड हैज बीन इनिशिएटेड. जो हमने बाइंग रेंज दी थी 60 टू 65, 64 या 65 का भी लो मारा है और अभी वहीं चल रहा है. सो द ट्रेड हैज बीन इनिशिएटेड फॉर द अपडेट. अविनाश. Okay. So guys, the trade have initiated officially. It made a low of 60, I guess, right? Yeah, 63, 64 around. 60. So guys, please hold the trade with a stop loss of 30, right, as we suggested. अगर उसमें कुछ भी changes होता है, we'll definitely update you. Definitely will update. And purposely have given little bit on the buying range because we have not seen any major swings. So that's why we have taken some advantage with going with in the money. So the trade is already open. Stop loss or target already mentioned किए हुए level, and we are also closely monitoring it. So जैसे भी कुछ update रहेगा तो हम definitely बताएंगे. Right now the trade is initiated, so we are tracking the trade also. Along with that, ideas हमने already share किए हैं. STBT, BTST, CDI calls and overall market breadth, and likewise
One thing I would like to add along with that, as a lot of things have been going on, India VIX has corrected sharply in last couple of days, and this has been the feature because of which the premiums have crashed and quite dramatically it has reduced because of India VIX fall. So there are a couple of reasons behind that. One is the as we are heading towards the end of the year, so there are no major events. Along with that, the monthly expiry month, and at the same time, the events have been ruled out, and because of the higher premium base, the premiums are much higher, because of which the premiums have cool off. So volatility is cool off, but at the same time, market is still under pain. So that clearly indicates that कि sector specific rotation चल रहा है, broader market तो भी ठीक है, but Nifty Bank Nifty जो majorly है, वो अभी भी they are not out of their wood, still थोड़ा pain है. Volatility index lower है, जिसकी वजह से momentum ज़्यादा नहीं है, but at the same time you have to follow the levels very importantly. Tomorrow we'll have off on the due to Merry Christmas, but Thursday will be monthly expiry for Nifty, so that will be a very important thing to look out for the monthly series. Coming back to Bank Nifty, जो trade initiate किया अभी 68, 69 उसी range में चल रहा है. Trade initiated है. Bank Nifty spot भी अभी चल रहा है 51 220 222 के around. 51 275 वीवा पे वीकली बैंक निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जो हमारा हर्डल जोन भी है, नीचे में 51 100 का सपोर्ट जोन है फॉर बैंक निफ्टी. Great. So guys, we are still tracking the trade and just be patient. Yes, my slight swings of barely 3 to 4 rupees, but yeah, definitely it's around 71 72 levels itself. We'll see, we'll give an update on it. 73 72 65 पर लोगों को 71 72 चल रहा है, but this has been the nature of the instrument for today. If we see overall this series, Bank Nifty has done stupendously volatile and काफी अच्छा momentum रहा है, but particularly on the expiry day so far we haven't seen any much sharp move. जैसा मार्केट का सेटअप रहेगा हमें उसी हिसाब से प्ले आउट करना पड़ेगा. You also keep in one thing in mind, every day cannot be trending, but at least whatever moves we have, we try to make the most of it and try to play the swing. Right. So guys, the trade Bank Nifty 51 300 put is trading near 67, I guess. Right. हमारे buying range से थोड़ा 2-4 पॉइंट ही ऊपर चल रहा था, and अभी थोड़ा सा एक और pull off दिखा हमें. So we'll still hold the trade. And one more thing I'd like to add, we are heading close to the 3 p.m. tick. So as of now the trade is open, but we'll revisit after a couple of minutes, because generally it's a monthly expiry, and post 3335 generally some swings could be seen, but generally as the rule wise, as we are in the system, अगर momentum ज़्यादा नहीं है, so it will hurt the option buyer. So we'll revisit this trade again in couple of minutes. In the meantime, we have discussed about the levels wise, Nifty, Bank Nifty, हमने stocks के बारे में बात किया. Pharma and reality pack are still looking very good, and FMCG थोड़े से resilient हो रहे हैं, but overall selective stocks में ही momentum है. And इस बार अगर आप देखें तो overall mid cap, small cap में selective pockets में अभी भी action है, but heavyweights have been little bit in pain. Mainly the mid cap, mainly the large cap ITs or the Reliance. Coming back to Bank Nifty trade, from 65 again to 75, 76, 77, 10 points move we have seen in Bank Nifty 77. So we are playing with the view, with the bias view, and थोड़ा swing हमने 8-10 point का देखा है guys. So whatever churning can be done, please make the most of it, because it's important to book profits. चाहे वो थोड़े profits हो, that's very important. छोटे moves है, but at least whatever moves you can book it, try to play that. So guys, currently it's trading near 75. थोड़े अच्छे खासे हमें 8-10 पॉइंट के स्विंग दिखा है इसमें, right? So you can churn your trade, or you can trail your stop loss. Currently trading near 76, 77, 79. So right now it's quoting around 74, 75 levels. Some swing was seen almost 8 to 9 points. And being a Merry Christmas Day, market also wanted the screen in red, and that has been so far. So with at this level, would like to close a trade because it's 3 p.m. and we'd like to stick to a rule that has been we are following from last couple of years. So we'll close out a trade because of the time constraint.
71 72 पे चल रहा है अभी बैंक निफ्टी का ट्रेड. We like to close out trade at this level. Having said that, 73 74 guys थोड़ा profit में है तो try to book it with the view that guys play one day at a time. It's very important. Overnight positions आप avoid करें the index because काफी swings है. Level wise में 23,850 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 51,500. जब तक इन दोनों के नीचे closing आएगी bias would be slightly negative. Stock specific action चलता रहेगा. So that's all from our side, Avinash, and to all the viewers. Merry Christmas in advance. I hope you have a great day, and see you all on Thursday for Nifty Expiry. Great. So thank you so much, Arpit sir. Thank you guys for joining. Overall, we'll consider this is a profitable session, even though हमें बहुत ज़्यादा बड़ा profit नहीं मिला, but still we'll consider क्योंकि 8 से 10 पॉइंट का upside दिखा, जो कि मैंने initially बोल दिया था कि एक range में move कर रहा है market पूरे सुबह से, right? So yes, you can officially close the trade, right? It may have 76.9 around 77 पकड़ सकते हैं, right? So yes, that's it from our end, guys, and don't forget to join us on Thursday. We will have a Nifty Expiry with none other than Mr. Chandan sir, right? So yes, don't forget to join the session. And currently it's trading near 77, right? But we have officially closed the trade. So yes, that's it guys from our end. Thank you so much, Arpit sir, and thank you guys for joining. Thank you.